Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read the lesson The Flower and the Coils. Unity is a great virtue. A man cannot do anything alone unless he works with others. Teamwork and collaboration make us achieve our aim with great ease. There is an old saying that the five fingers of a hand are not alike, but the power of a fist which brings the five fingers together is immense. That made the great poet Shakespeare say, "We know what we are, but we know not what we may be." If we cooperate with each other, no one will be able to break us. But if we quarrel among ourselves, our enemies will take advantage of this and defeat us. We have to read this poem and learn from the poem what unity is. Once upon a time, there lived a quail in a forest at head of many thousands of quails. एक दफा एक बटेर बहुत सारे बटेरों की सरदार एक जंगल में रहती थी. A fowler who caught quails came to that place. एक शिकारी जो उन परिंदों को पकड़ने के लिए इस जंगल में आता था, उस जगह पर आता था. He used to imitate the note of a quail till the birds had been drawn together. वो जानवरों की बोली, कोयलों की बोली यानी कि बटेरों की बोली बोल कर उनकी सी आवाज़ निकाल कर उन परिंदों को एक जमा करता था. He flung his net over them. और अपना जाल उन पर फेंक देता था. And whipped the sides of the net together. और जाल को समेटता था. So as to get them all huddled up in a heap. उससे वो इन जानवरों को गुच्छे की तरह बंद कर देता था. Then he crammed them into his basket. वो अपनी उस टोकरी में उनको ठूंसता, फिर वो उनको अपनी टोकरी में ठूंसता था. And sold his prey for a living before going home. और अपने शिकार को जिंदा वो बेच देता था और घर जाने से पहले बेच देता था. Now one day the leader quail said to other quails. एक दफ़ा उस लीडर बटेर ने बाकी को बटेरों को कहा, This fowler is creating havoc among our kinsfolk. ये शिकारी हमारे लिए मुसीबत बन चुका है. I have a device whereby he will be unable to catch us. मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो हमको पकड़ नहीं सकेगा. Henceforth, the very moment he throws his net, इससे पहले कि वो हम पर जाल जूं ही वो जाल हम पर फेंकेगा, let each one of you put his head through a net and then all of you together must fly away from with the net to such a place as you please. फिर आपको एक साथ उस नेट से अपने सर बाहर निकालने हैं और नेट के साथ कहीं और जगह पर उड़ कर जाना है.
اینڈ ڈیئر لیٹ اٹ ڈاؤن آن دا تھارن بریک. تو پھر اس نیٹ کو کسی جاڑی پر چھوڑنا ہے. دس ڈن وی ول آل اسکیپ فرام آور سیورل میشز. اس سے ہم اس مصیبت سے بچ جائیں گے. ویری گڈ. بہت اچھا. سیڈ دے آل ان ایگریمنٹ. سب نے ایک ساتھ کہا. تھینکس ٹوڈے.